A big focus, the violent clashes in New Haryana have shocked the nation. A mob of over 700 people have pelted stones and torched automobiles, resulting in the death of 5 people, including 2 home guards, and injuring over 150 others, including police officers. The violence began when a religious procession was stopped by a group of people who objected to its route. The 2 groups then clashed and the violence quickly escalated. The police were unable to control the mob and the violence spread to several villages in the area. The state government has imposed Section 144 and suspended internet services in 5 districts in an attempt to prevent further violence. However, these measures are only a temporary solution. The state government needs to take long-term steps to address the root causes of communal tensions in Haryana. The violence in New is a tragedy, but it was also an opportunity for the state government to take steps to build a more peaceful and inclusive society. The government must act now to prevent such incidents from happening again. NewsX is decoding the FIRs lodged in the New Haryana incident. It's time the government takes a stringent crackdown on the miscreants. Major General JKS Parihar, our defense expert, joins us live. We also have Ellen Rao, former DCP Special Cell, live with us. Ved Bhushan, former ACP, is live with us. Ajay Verma, senior journalist, is also joining the broadcast. Let me bring you in here first, Major General Parihar, on what action now you believe the police should take. Obviously, the priority was bringing peace back to the area, ensuring that the violence does not spread further. But now surely a crackdown, surely penalization is needed. Thanks to them for inviting me. So far the police action is concerned, I think there are the other experts are there, those who are more knowledgeable about it. But as a defense personnel and as a citizen, I prefer to add on that police has to contend with all those whatever is happening, the control on the violence that they have done it. Initial phase, yes, there was I feel so. There may be some security lapses on the intelligence failure. They could not anticipate that this procession may land up with this kind of a stone pelting and other activities. So that is the one which has already gone. Thereafter, they were not able to contend the whatever has happened in the Gurugram and all. But later on, the police has started acting on it. We have to segregate those people, those who are engaged with this kind of antisocial activities. Here, I would like to add one very important point is there that we should not give it to the religious angle to this entire episode. There are always antisocial elements who take advantage of situations and they enter from both the side and spoil such particular issues. And that too with the Mewat, with the Mayo people, those who have the different distinct culture of the Muslims, of the pro-patriotic type, even in the during partition and then 92 episode also post Babri Masjid, there were no violence. But since now there are some seats have come from the Saudi Arabian nexus, so we have to be very concerned about the security engagement of the other people, those who are entering, and it may become a soft target for the ISIS and other groups. So there the police has to look into those aspects with more concern rather than taking as a small piecemeal steps and giving the different angle on the religious background. Yes, absolutely. Let me in fact also take that straight across to Ellen Rao as well. Ellen Rao, what do you believe now should be the priority of the police? Various FIRs have been lodged. What will happen next, sir? All right, we've lost Ellen Rao, I'm being told. Meanwhile, I'm being told the Chief Minister of Haryana, Manohar Lal Khattar, is also speaking out. Let's go across. जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही इश्यू करेगी। इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही इश्यू करेगी। इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। तो जिन्होंने
Let me take that across to Ved Bhushan, former ACP. Ved Bhushan, do you believe that there have been lapses on the part of the police so far that allowed the violence to spread, or do you believe it's something that was out of their control because of the sheer numbers of miscreants that were on ground? उदय, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या राइज उठता है कि क्या इन दंगों को प्रिवेंट किया जा सकता था, प्रिवेंटेबल थे, या फिर पुलिस उसमें फेल होगी इस तमाम प्रक्रिया के अंदर जो पुलिस स्टेप्स उठाए जाते हैं। मेरा बिल्कुल एक फर्म व्यू है, क्योंकि मैं बिल्कुल जमीन से धरातल से जुड़ा हुआ ग्राउंड रियलिटीज को समझने वाला आदमी हूं। धौला कुआं रेप जब हुआ था दिल्ली के अंदर, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। एक आदमी को, एक क्रिमिनल को मेवात से नूह से उठाने के लिए 500 दिल्ली पुलिस पर्सन वाज डिप्लॉयड। बसों के अंदर पुलिस गई थी केवल एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, और डीसीपी रैंक का ऑफिसर उसको लीड कर रहे थे। ये 80% मुस्लिम एरिया है, 20% अदर कम्युनिटीज हैं। वहां का यदि आप क्राइम ग्राफ देखेंगे तो आप चौंकन्ने हो जाएंगे, चौंक जाएंगे किस तरह से हीनियस क्राइम वहां पर होते हैं। मतलब, और इस टाइम साइबर का सबसे बड़ा 90% साइबर जो सेक्सटॉर्शन का रैकेट्स है, मनी रिलेटेड रैकेट्स हैं, सारे नूह से रेवात से चल रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा साइबर पुलिस स्टेशन पर सबसे ज्यादा उनका गुस्सा था। उन्होंने पूरी बस रैम कर दी दीवार के अंदर, पूरे थाने को तहस नहस कर दिया, पुलिस वालों को मारा। ऑटोमेटिक वेपन्स थे उनके पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दे वर हैविंग सम ऑटोमेटिक वेपन्स विद देम। और केवल एक प्रिटेक्स्ट लिया जा रहा है कि इट वाज ऑल ड्यू टू मोनू मानेसर। मोनू मानेसर इज नथिंग, ही इज अ बिग जीरो फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी एंड यू। उसकी आड़ के अंदर आप दंगा करें, आप इनोसेंट लोगों को मारे, प्रॉपर एक परमिशन ली गई थी उसके लिए, और वो हर साल निकलता है। और तमाम पक्षों को मीटिंग की गई थी डीसीपी ऑफिस में कि वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू क्रिएट ना हो। तो ये एक बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत था, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत था, सब कुछ ऑर्गेनाइज था, टाइमिंग बिल्कुल फिक्स थे, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। लगभग 139 अरेस्ट अभी तक इसमें हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रिवेंटिव अरेस्ट हैं। तो इनको डिटेन करने का आगे फर्दर ना एस्केलेट हो। जो नॉन क्रिमिनल्स हैं, या अब तो सीसीटीवी डिजिटल का टाइम है, तमाम क्रिमिनल्स जो इन्वॉल्व थे सब आइडेंटिफाइड हैं, कोई दूसरे स्टेट से नहीं आए, उसी स्टेट के उसी जगह के रहने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस उस पर बिल्कुल अपना अटेंशन पे करेगी, उनको तमाम को डिटेन करेगी। और जैसा कि सीएम साहब भी अभी आपने दिखाया कि कह रहे थे कि उन पर एक पेनल्टी डाली जाएगी, जैसा पुराने ब्रिटिश टाइम के अंदर किसी गांव में ऑफेंस होता था, पूरे गांव को जुर्माना लगाया जाता था। वो एक अलग उनका पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, परंतु फिर मेरा बिल्कुल मानना यह है कि यदि एक बहुत डेटरेंट एक्शन यदि पुलिस ले, आज भी ले, तो फर्दर इसको जो एस्केलेट हो रहा है, पलवल तक पहुंच गया, सोना पहुंच गया, गुड़गांव पहुंच गया, तो शायद उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और आगे के लिए एक मैसेज दिया जा सकता है। मैं बुलडोजर का तरफदारी नहीं कर रहा हूं कि योगी मॉडल लाया जाए, परंतु जरूरत है इस टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जाने की। एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप एक तो गलत तरीके से रह रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस कर रहे हैं, उसके बाद भी आप एक हिकमत अमली दिखाएं कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये दिस इज द हाई टाइम जब पुलिस को और सरकारों को, जो भी सरकारें हैं वहां पर, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, को तमाम स्टेट की बात कर रहा हूं, चाहे दूसरे पॉलिटिकल रन स्टेट हैं, एक जरूर एक इस टाइम वक्त की जरूरत है कि बहुत डेटरेंट एक्शन हो, जिससे कि मैसेज दिया जाए। इवन मणिपुर के अंदर भी डेटरेंट एक्शन जितना अभी होना चाहिए था उतना अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो जरूरत है इस वक्त की, यदि नहीं दिया गया तो ये पूरे इंडिया में फैल सकता है। आपने देखा पेरिस के अंदर एक छोटी सी इंसिडेंट से किस तरह से ट्रिगर हो गया, केवल एक वो यंग बॉय को मार दिया गया, पूरा फ्रांस जल पड़ा। कि नॉट ओनली पेरिस, पूरे फ्रांस के छोटे छोटे जो शहर हैं, कस्बे हैं, वहां तक ये चीजें चली गई। तो ये एस्केलेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बिल्कुल इसमें बहुत डेटरेंट एक्शन लिया जाना चाहिए, जो अभी तक अपेरेंटली मेरा ये मानना है कि उतना दिखाई नहीं दे रहा है जितना दिखाई देना चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि यदि दोबारा से यदि इस चीज पे
कोशिश की गई तो उसका एक बहुत मजबूत जवाब दिया जाएगा। कानून में तमाम तरह के प्रोविजंस हैं, बहुत सारे जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, तमाम तरह के एक्ट और प्रोविजंस हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल सरकारें करें। कोई कोर्ट ने, अदालत ने किसी को मना नहीं किया है। जो अभी अरेस्ट हुई है इनको प्रॉपर इनकी पैरवी होनी चाहिए अदालत के अंदर, ये बेल पर ना आ पाए, सो दैट जो अदर क्रिमिनल्स हैं, रन अवे हैं, भागे हुए हैं, चाहे मोनू मानेसर है, वी आर नॉट advocating Monu Manesar. If he is a criminal, is he required in Rajasthan for 2 murders? He may be held right now. He may be arrested right now. परंतु केवल ये कह देना कि चूंकि मोनू मानेसर की वीडियो वायरल हो गई थी इसलिए ये उसके रिपरकशन में हो गए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और सरकारों को बिल्कुल इस बारे में अलर्ट किए जाने की जरूरत है कि वो इस प्रेटेक्स्ट पर बच नहीं सकते कि मोनू मानेसर ने एक धमकी दी थी कि वहां पर कत्लेआम होगा। जो भी उनके वायरल वीडियो में था बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वक्त है, क्योंकि यहां पर जो काउस की स्मगलिंग का एक पुराना इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। काउ विजिलेंट ठीक है, वो अपनी उनका एक एंगल हो सकता है, बीएचपी का अपना एक एंगल हो सकता है, पर एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जाने की जरूरत है। उदय प्रताप, ओवर टू यू। Okay, let me take that to Ajay Verma. Ajay Verma, what sort of action should now follow to make an example of this particular case to ensure that no other miscreants take the law into their hands, and we hopefully do not see this in any other part of Haryana or the country, Ajay? See, as already delved into the issue by my previous experts, my participants, that knew particularly that area, if you see Haryana, has all through been very, that you can call it because of the cow vigilantes, because of one communal angle that's been given always by the politicians. It has always been on the brink of things. Now with this new thing, first of all, I would like to ask through you, the police and the government, why preventive steps were not taken? Why, when the permission was granted for that yatra and a day before, that video influencer, Monu Manesar, or call him a Mohit Yadav, for that matter, as the names have come, who had been accused of 2 killings in Bhiwani, 29 July, there was a WhatsApp message by him that he, along with his team, would be participating. Was the government or the administration of the police not aware of it? And if not, it's a failure, number one. Were they not aware that in such processions, with the elections around the corner, for that matter, again, I'm adding one angle to it, and with the politicians taking advantage of the gulf, which is always there and had been there for ages between the two communities, and that particular area being very communally sensitive, why permission was granted, number one, after that Bhiwani incident. Number two, if the permission was granted, why adequate arrangements were not made to ensure that people did not carry, as has been claimed, if at all people carried some arms, weapons, why were they allowed? Why checks were not, why steps were not taken to check them? Number three, Monu Manesar video came out. Why immediate action was not taken to arrest that person immediately and take preventive steps to check the spread of violence? Are we just taking things for granted? This is on the part, I see, the failure on the part of the administration. Number two, the failure on the part of the politicians, that they are taking it to the hilt of things, making all kinds of claims, making all kinds of statements, which is not acceptable in a constitutional democracy. Number three, the failure of the internet users to act responsibly, to act as a responsible citizen. As said by Vedji, in France, people, Gurgaon and those areas, most of the people there who have been using internet or been using or living in those areas are aware of things. Why social media was made to be used by such troublemakers? We need to be responsible. Actions, preventive, need to be taken.
post-actions or post-mortems won't help solve these kind of social issues which have got impregnated, and with the elections around the corner is sure to get inflated. Uday. That very quickly across to Ellen Rao as well. Do we have Ellen Rao back with us? Do we have Ellen Rao's connection? All right, we still don't have his connection, unfortunately. Okay, Ved Bhushan, do you believe that these are serious lapses that the government, the Home Ministry and the police should introspect on, or is Ajay Verma being unfair? Ved Bhushan. Ajay Verma rightly pointed out, this is a cyber criminal hub of this area. Whatsoever Monu Manesar's viral video was reached to every person of the new area, and they suppose that this person will create a big problem for the Muslims. So he's rightly pointed out, he must be detained, he must be searched at all, और जो भी preventive action उस टाइम पर प्रोसेशन के साथ होने चाहिए थे, जो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट थी वो तमाम होने चाहिए थे. ठीक है, आपने परमिशन दी, नो डाउट, इट वाज गोइंग ऑन फ्रॉम प्रीवियस, कई साल से वहां पर हो रहा था, नो प्रॉब्लम, बट आपको एप्रीहेंशन होनी चाहिए थी कि ये बड़ा डेलिकेट टाइम है. एक दिन पहले नांगलोई के अंदर दंगा हुआ है, उसी टाइम पर यूपी के अंदर पीलीभीत में, दूसरी जगह पर बिहार के अंदर शिया सुन्नी दंगे हुए हैं. तो ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन की वजह से सारा एटमॉस्फेयर चार्ज है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्टेक सर्च कर रही हैं. ऐसे टाइम पर एक्स्ट्रा विजिलेंस की जरूरत थी, जो शायद कहीं ना कहीं, मेरा मानना है उदय, कहीं ना कहीं कमी तो रही है, जिसकी वजह से ये इतना लार्ज स्केल पर पहुंच गया कि 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी और बहुत सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लॉस उठाना पड़ा, कि काफी सारे लोग वहां पर इंजर्ड हुए, और किस तरह से जो एमएनसी के ऑफिस हैं गुड़गांव के अंदर, क्योंकि इसका एक केवल गुड़गांव हरियाणा तक असर नहीं पहुंचता, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके तमाम के ऑफिस गुड़गांव में, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम. तो एक वर्ल्ड में एक मैसेज आता है कि गुड़गांव के अंदर या इंडिया के अंदर पूरी एक प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम है. तो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं, आज नहीं तो कल एडवर्सली इफेक्ट करती हैं हमारे सिस्टम को, हमारे बिजनेस को, हमारी इंडिया की इमेज को. तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये पूरे पुलिस सिस्टम को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जरूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे अच्छा एक प्रोग्रेसिव हम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो निगेटिव चला जाए. तो इसलिए ये वक्त की जरूरत थी कि वो शायद नहीं हो पाया, या उतनी फोर्सेस नहीं अवेलेबल थी. तो जरूर कहीं ना कहीं कमी तो रही है, इस बात से डिनाई करना एटलीस्ट जो मेरे जैसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के लिए कहना ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग, अदरवाइज इस तरह के हालात नहीं बन सकते थे. पुलिस कैन रिटेलिएट, पुलिस के पास में तमाम आर्मरी है, तमाम आर्म्स एंड अब्निशन है, वहां पर होमगार्ड्स को भेज दिया गया, बेयर हैंडेड होमगार्ड्स को भेज दिया गया. हाउ दे कैन रेस्पॉन्ड, उनका यही वजह हुआ कि उनको गोली खानी पड़ी, उनकी जान चली गई. यदि तमाम वहां फोर्सेस तमाम वेल इक्विप्ड होती हैं, तमाम गियर अप होती हैं इस तरह के सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए, तो शायद इस स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था. तो मेरा पहला सवाल यही था कि क्या ये प्रिवेंटेबल था, क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? यस, ये अवॉइड किया जा सकता था. कहीं ना कहीं स्लैकनेस है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, हुसोवर रेस्पॉन्सिबल, जरूर उसमें एक्शन होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की जो साख और क्रेडिट है वो बनी रहे. क्योंकि हरियाणा में मिक्स पार्टीज की गवर्नमेंट है, दोनों पार्टीज आपस में मिलकर चला रही हैं. यदि कोई संतुलन बिगड़ गया तो गवर्नमेंट भी गिर सकती है. ऐसे हालात में जरूरी है कि दोनों पार्टी जो भी पावर के अंदर हैं, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज जो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, कोई भी कम्युनिटी से हैं, वेदर इट्स ए हिंदू कम्युनिटी, वेदर इट्स ए मुस्लिम कम्युनिटी, इट मेक्स नो डिफरेंस. डेटरेंट एक्शन होना चाहिए, एक मैसेज पहुंचना चाहिए, जो मुझे लगता है कि मैं लगातार इस स्टोरी को, सारे मामले को चेज कर रहा हूं, जो अभी तक शायद नहीं पहुंच पाया है. जिस तरह के यूपी में एक मैसेज जाता है, यदि कोई इंसिडेंट, कोई दंगे होते हैं, सीएनआरसी को लेके कोई दंगे होते हैं और कोई बड़े इश्यूज आते हैं, तो सरकार वहां पर मैसेज देती है. वो मैसेज शायद यहां पर इट्स लैकिंग इन हरियाणा टिल डेट. ओवर टू यू देयर. General Parihar, do you believe that, at the end of the day, of course, the
the situation was normalized because of the deployment of columns of the army, of more security presence that was increased there? Do you believe that should have perhaps happened earlier? Also, as far as the internet shutdown is concerned, which I think is still in place for several hours, it's been relaxed slightly, but do you believe that also was needed along with the curfew that was imposed as well? I think ACP Ved Bhushan has given a wonderful canvas on how the situation has cropped up and how it should have been maintained. Yes. In the present era, you restrict the local internet. I don't think it makes too much sense. Actually, we have entered into the global issues, and we all are exposed from various sources. The information can pass it on to different issues. The most important issue, what I feel so, first of all, there is no doubt that administration could not assess the situation, that it can go into this scenario, and there were so many lapses which has been highlighted by Mr. Ajay Verma and Ved Bhushan. This is absolutely fine. The issue next comes that we should not take this situation as only a piecemeal manner. We are entering into the election mode now, all political parties and administration. So this type of reactions and other activities will be keep on coming. You see why it is happening in the Gurgaon, then in the Bihar and in all other places. It means there is a central link which has been established. This particular area with the dominance of one particular community makes it very soft, not the target, but the soft place to have the soil to give nutrition and growth to the all international anti-social elements, terrorist groups, ISIS, who have PFI and all. And they are making it as a hideouts plus point to trigger in different places. So that is my concern. Second concern on, if you go by the military aspects on it, this particular region from Delhi to Ambala is very, very sensitive for the deployment, and all other locations are concerned. Other than that, a good seasoned number of troops that joined from Mewat areas, south of Haryana, north Rajasthan. So there with this, these people, anti-element, social element, may enter into the people, those who are in the service. So that is my another concern. We have to take in a very big, broad canvas to address this situation, not on the based on the political gain or so at the national level of international security threat. I would like to add on like that. Okay. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.